Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. In today's lecture, topic for discussion is cohesion and coherence in discourse. Dear students, this is one of the important topics or main topics in the course contents of discourse analysis and also English 3. Discourse analysis is one of the branches of linguistics. So we are studying cohesion and coherence under the umbrella of discourse analysis. Dear students, we know that when we are using words in speech or in writing, we are joining or combining these words logically or meaning wise with the help of some other words. It means that these joining words are technically called cohesive devices or lexical devices. In writing or speech, under the same concept, it means under the same concept means in discourse. Okay, writing or speech is called discourse. Writing means written discourse, while speech means spoken discourse. It means that we have two types of discourse. Okay, written discourse and spoken discourse. Dear students, जब भी हम लिखते हैं, जब हम स्पीच करते हैं, बोलते हैं या हम जो कुछ लिखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी अल्फाज एक दूसरे के साथ जाइन हो, आपस में अल्फाज में रबत हो, या हमारी राइटिंग में जुमलों में आपस में रबत हो, तो ताकि हमारा जो मैसेज है वो अच्छी तरह रीडर को पहुंचे या हमारी जो लिसनर्स है, ऑडियंस है, वो समझ जाएं. ठीक है. सो उसके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं. उस वर्ड्स को टेक्निकली कोहेसिव डिवाइसेस और लेक्सिकली डिवाइसेस कहते हैं. ठीक है. ये जो हम बोलते हैं या जो हम कुछ लिखते हैं लिंग्विस्टिक्स में, दिस इज कॉल्ड डिस्कोर्स. ओके, written discourse or spoken discourse. These are the two types of discourse. Let's study discourse. Writing in speech need logical connections, yes, among or between sentences in order to convey the meaning of writer or speaker in best possible ways. Yes, readers, writers, our speakers ये कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह जो हमारी अल्फाज है, मैसेज है, वो बेस्ट पॉसिबल वेज में कन्वे करें लिसनर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, या जो हमारे रीडर्स हैं उनके लिए आसानी हो. ठीक है. सो हाउ दीज कनेक्शंस कम इन राइटिंग और स्पीच. यस, कुछ कनेक्शन बना लेते हैं जो हमारे राइटर्स हैं या जो स्पीकर्स हैं. दे आर मेकिंग कनेक्शंस, okay, in order to convey their message in best possible ways. So how these connections come in writing or speech? These connections come through cohesion and coherence. These are two technical terms and we are studying in today's lecture these terms specifically. Okay, so now let's study what is discourse. These are the two main concepts. Cohesion and coherence are the two main concepts in the study of discourse. So now what is discourse? Let's define. Discourse means written or spoken communication or debate. Okay, this is the, like, these are the journal meaning or the literal meaning of the word discourse. Okay, discourse means written or spoken communication or debate. Discourse means verbal interchange or exchange of ideas in communication, especially, yes, especially in communication. So it refers specifically, it means communication. Okay, verbal communication. But in linguistics, any unit of connected speech or writing longer than a sentence is called discourse. Like the first one, written or spoken communication or debate, this is the literal meaning of the word discourse. Now, in technical terms, we can say that any unit of
connected speech or writing longer than a sentence is called discourse. Dear students, we have grammar, we have phonetics and phonology, other branches of linguistics, but these are like limited or restricted to the study of like in grammar we are studying sentences, paragraphs. Okay, now here we are studying the meaning of words or sentences, writing or speech longer than a sentence. So formal discussion of a subject in a speech or writing is dissertation, treatise, sermon, etc. These are also like the forms of discourse. Dissertation means long piece of writing, okay, especially on research based for the university degree. Treatise means serious discussion on one topic, okay, or subject. Sermon, we are delivering sermon, we are sermon means moral advice, okay, in which we are expressing or we are taking moral advice in sermon. So these are the different types of discourse. So basically, discourse is related to written or spoken communication. So now we are going to study coherence. Okay, what is coherence in discourse? Generally, coherence means a situation in which all parts of something fit together well. Okay, coherence means a situation in which all parts of something fit together well. This is the general meaning, okay, of coherence. Like, the key to the concept of coherence is everything fitting together well. Yes, this is according to the study of language by Gerjul. So everything fitting together means coherence. Coherence is not something exists in words or structures, but something exists in people. Yes, it is the job of people to make sense of what they hear or read, what they are reading or what they are hearing. This is the job of the people. They are making like a meaning of the spoken words, or they are making meaning of the written words. So discourse, coherence means fitting together, everything fitting together, and these are not exist in words, but these exist in people. Okay. Now, coherence means coherence is an attachment, very beautiful definition. Coherence is an attachment and connectivity among ideas in sentences of a paragraph, and easy to create flow, rhythm, and beauty. Yes. So why we want coherence or connectivity or attachment among ideas in sentences? For the sake of to create, okay, to make the job of the reader or the listener easy to understand the context or the text or discourse or talk or speech or sermon or debate. Okay, so we are, with the help of coherence, we are making we are facilitating our readers or listener or audience, okay, are people who are taking part in participation. So, to create flow, rhythm, and beauty in a text, in discourse, in talk or sermon, so for these purposes, we are using coherence. Okay. Furthermore, there must not seem a gap among ideas, sentences, and paragraph. Yes, there should not be lacking these things. If we are not putting together our ideas, if we are not making connection, or if we are not bringing connectivity among ideas or concepts, so ultimately our readers or our listeners, audience, students, they will not be getting the ideas or the concept which we are explaining, okay, or which are explained by the writer or speakers. So cohesion is needed for the sake of flow of ideas, rhythm, and beauty in a text, oral or written.
Now, example of coherence in a text, but we have two types of coherence. Okay, first of all, we are studying these types of coherence: logical coherence and verbal coherence. We have two types of coherence. Okay, logical coherence and verbal coherence. Logical coherence means, dear students, connections among ideas, meanings, thoughts, or concepts. So, logical connection are related to the ideas, okay, attachment of ideas, meanings, and thoughts or concepts. Verbal coherence means connections or ties among sentences in paragraph. Verbal coherence is also means grammatical ties. Dear students, remember, ये जो लॉजिकल कनेक्शन है इसका ताल्लुक आइडियाज के साथ है कि मीनिंग वाइज क्या हो, एक टेक्स्ट में यूनिटी हो, हम आहंगी हो, ठीक है, मुताबिकत हो. सो अगर हम मुताबिकत ले आना चाहते हैं टेक्स्ट में, टॉक में, सरमन में, खुतबा में, ठीक है, किसी स्पीच में, अगर हम आपस में सेंटेंसेस में हम आहंगी ले आना चाहते हैं, सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द लॉजिकल कोहेरेंस. ओके, जब हम वर्बल कोहेरेंस की बात करते हैं तो वर्बल कोहेरेंस का मतलब है कि हमारी टेक्स्ट में क्या हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो. ठीक है, ग्रामर वाइज हमारा टेक्स्ट, जो स्पीच हो, जो भी हो, जो डिस्कोर्स शुरू हो, वो हमारा क्या हो, ग्रामर वाइज ठीक हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें ना हो. ठीक है, जो ग्रामेटिकल टाइज हम यूज़ करते हैं, जो अल्फाज हम यूज़ करते हैं आपस में सेंटेंसेस जोड़ने के लिए, वो क्या है, वर्बल कोहेरेंस है. और वर्बल कोहेरेंस का मतलब है कोहेजन. ठीक है, वर्बल कोहेरेंस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कोहेरेंस, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कोहेरेंस. ठीक है, ये जो वर्बल कोहेरेंस है इसको कोहेजन भी कहते हैं. वर्बल कोहेरेंस इज आल्सो कॉल्ड कोहेजन. सो वी कैन से दैट we have like one term coherence, and cohesion is the type of coherence. Verbal coherence is one of the types of coherence. Yes, cohesion is defined. अब cohesion का मतलब क्या है? Cohesion is defined as the ties or connections that exist within a text. ठीक है, ये ties हैं, कुछ अल्फाज हैं, ख़ास अल्फाज हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट में हम आहंगी लाते हैं, टेक्स्ट में खूबसूरती लाते हैं, ताकि मीनिंग क्या हो, वाज़ेह हो जाए, और हम आपस में सेंटेंसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. हम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस बना लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, कोहेजन यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ लाइक डिस्कोर्स मार्कर्स यूज़ करते हैं, ग्रामेटिकल टाइज यूज़ करते हैं, एंड, बट, therefore, yet, so, for, due to, moreover. So these all are grammatical ties. These ties are connections with reference to cohesion or grammatical devices or cohesive devices. ये जो ties है जिसके ज़रिए हम कनेक्टिविटी लाते हैं सेंटेंसेस में. ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना करें कोहेजन और कोहेरेंस को. कोहेरेंस जो है ये इसका ताल्लुक मीनिंग के साथ है. ठीक है, टेक्स्ट में जो हम मीनिंग लाते हैं, वो हम मीनिंग में जब हम आहंगी लाते हैं तो कोहेरेंस के ज़रिए लाते हैं, और जब हम अल्फाज में या सेंटेंसेस में जुमलों में मुताबिकत लाते हैं, एक दूसरे के साथ जुमले जोड़ लेते हैं, तो ये हम कोहेजन के ज़रिए करते हैं. सो कोहेजन ग्रामर के साथ रिलेटेड है, और कोहेरेंस मीनिंग्स के साथ रिलेटेड है. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कोहेजन. यस, फर्स्ट कोहेरेंस की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उससे हम कोहेजन की भी. जी, एग्जाम्पल ऑफ कोहेरेंस इन अ टेक्स्ट. एक टेक्स्ट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बेस है. ओके, आई विल रीड इट. It is quality education which can fasten national integration in a society and country.
दिस इज वन सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है। अब इसके साथ हम और सेंटेंसेस जोड़ लेते हैं ताकि मीनिंग में मुताबिकत हो, कि हमारी सारी सेंटेंसेस का मतलब एक हो, ठीक है। इट इज क्वालिटी एजुकेशन विच कैन फास्टन नेशनल इंटीग्रेशन इन अ सोसाइटी इन कंट्री। इट इक्विप्स एन इंडिविजुअल विद नॉलेज, अवेयरनेस एंड इंसाइट, ठीक है। नाउ इट जो यूज हुआ एजुकेशन के लिए यूज हुआ है। Okay. Furthermore, it enhances an individual with variety of skills to earn employment in public or private sector and in foreign countries. It is quality education which makes a citizen to develop its cognitive abilities, which is a best tool to differentiate between right and wrong. And due to this, individual cannot deviate from social and national norms of society. As Sir Syed has rightly said, educate, educate, and educate. Cure the roots, and the tree will flourish. Very beautiful quotation, okay? Educate, educate, and educate. Cure the roots, and the tree will flourish. कहते हैं कि आप तालीम दे और तालीम दे, लोगों को आगाही दे, आगाही दे, आगाही दे, उनकी रूट्स पे, लाइक एक ट्री के दरख्त की रूट्स पर आप काम करें, जड़ों पर काम करें, ताकि एक अच्छा सा पौधा आपको फ्लरिश हो जाए, मिल जाए। जी, आप मतलब एक स्टूडेंट को तैयार करें, उसके बेस पे आप काम करें, उनको एजुकेशन दे, ताकि आपको एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो आप नेशन को बिल्ड कर सकते हैं, वो आप एजुकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। Moreover, an educated person is always a great source of inspiration for others, and he can convert anti-state elements to work for national building. Hence, this is proved that quality education is an effective tool to strengthen the national integration. So, dear student, now look, in these sentences, like topic is one topic, quality of education. So all sentences, like in this context, there is one meaning, one idea is expressed. There is like connectivity among the ideas, okay, new ideas and already like the developed ideas, okay. So there is like connectivity is there, connections are there, logically they are linked together, sentences are there is attachment, logical attachment is there among the sentences in this paragraph, okay. Expressed one thing, one idea, which is quality education. So now look, furthermore, this is the example of cohesion, like it ties, okay, grammatical ties are डिस्कोर्स मार्कर है। ये फर्दर मोर एक डिस्कोर्स मार्कर है जिसने क्या किया है, सेंटेंसेस में लिंक बनाया है, ठीक है। फर्दर मोर जो पहले सेंटेंसेस हैं और जो अभी बयान होने वाले सेंटेंसेस हैं उसमें लिंक बना लिया फर्दर मोर ने। अच्छा, यहाँ पर इन ड्यू टू दिस अगेन डिस्कोर्स मार्कर इज यूज्ड। मोर ओवर ये भी एक डिस्कोर्स मार्कर है, हेंस ये भी एक डिस्कोर्स मार्कर है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोहेजन, ओके। कोहेजन आर लिंक्ड विद ग्रामर, ग्रामेटिकल टाइज, कि ग्रामेटिकली ये क्या हो, ठीक हो। नाउ वी हैव some other detail like tools of logical coherence. Yes, logical coherence हम कैसे ला सकते हैं? relevant content के जरिए, do not repeat the content. Sorry, यहाँ पर एक missing है repeat का word. Do not repeat the content. Logical connection among नीव ideas and topic of the essay or discourse that is written or spoken, ठीक है। लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, जो आपने एक्सप्रेस किए हैं आइडियाज को और जो अभी न्यू आइडियाज आप बताना चाहते हैं उसमें लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ये क्या है? ये दीज आर द टूल्स फॉर लॉजिकल कोहेरेंस। रिलेवेंट मटेरियल, डू नॉट रिपीट द कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, लॉजिकल कनेक्शन अमंग न्यू आइडियाज एंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश आइडियाज अमंग द paragraphs of the essay or discourse. Now, what are the tools
for verbal coherence or cohesion. Verbal coherence also means cohesion. Discourse markers हैं like or, therefore, furthermore, due to, connectors and but, जिसके जरिए हम कनेक्टिविटी लाते हैं, sentences आपस में कनेक्ट करते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, देयरफॉर, दस, हैंस, ठीक है। यूज ऑफ प्रोनाउन, यस, कि हम प्रोनाउन को गलत यूज ना करें। अगर हम मतलब फेमिनिन को रेफर होते हैं या मिस्कुलिन को रेफर होते हैं तो हम, या हम प्लूरल को रेफर होते हैं तो हम ख्याल करें कि प्रोनाउन गलत ना हो। सिनोनिम्स एंड वेरिएशन इन वर्ड्स ठीक हो, यस, समटाइम्स एक वर्ड एक जगह हम यूज कर सकते हैं बट we cannot use the same word for, like exchangeable नहीं होता है, interchangeable नहीं होता है। joining in different parts of the paragraphs, कि हम ख्याल रखें कि इन सारी चीज़ों में क्या हो, कनेक्टिविटी हो। अगर वो ग्रामर के साथ है तो कोहेजन है, अगर मीनिंग के साथ है तो कोहेरेंस है। Dear students, we have learned that discourse means talk, speech, sermon, or piece of writing. There lies some link. Yes, there lies some links. These are possible with the help of cohesion and coherence. Coherence is very comprehensive term which means logical or meaningful connection in a text. Cohesion is grammatical connection in a text. So dear students, now we are able to define discourse, discourse markers, cohesion and coherence, and we can also provide examples from the quality of education, like other examples we can provide. If you have any question, please ask. You can comment. In comment, you can ask questions. Thanks and best wishes. Assalamu alaikum.